है दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डी फर्स्ट ईयर वालों को ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द सेल एंड राइट ए नोट ऑन द पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग। Explain the structure of neuron in detail. Define blood and write its composition and function. Explain erythropoiesis. Formation of erythrocytes. Explain leukocytes with its examples. List out clotting factors and explain mechanism of clotting. Write a note on the ABS system of blood with RH factors.
Define and classify joints and explain synovial joints. Subscriber hormone. Define a skeletal system and write its function. Explain lymph nodes with a neat level diagram. Write a note on the spleen and give the composition and function of lymph. Structure of spleen. यह structure capsule, rabicula, vascular sinusoid, white pulp. Functions, composition of lymph. Explain the anatomy of the heart. Heart position, structure, right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricles, tricuspid valve, bicuspid valve, pulmonary arteries, pulmonary veins. Explain blood circulation. Circulation of blood is described in 4 parts. Pulmonary circulation, systemic circulation, coronary circulation, portal circulation. Next question, explain cardiac cycle. Ventricular systole, atrial diastole, ventricular diastole. Write a note on a ECG, BBP. उसके बाद ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. Factors maintaining of blood pressure. Next question, explain the conduction system or junctional tissue of the heart.
AB node, atrioventricular node, atrioventricular bundle, AB bundle, bundle of His, 4 Purkinje fibers. Next question, explain the structure of kidney with its functions. Kidney, functions of kidney. Next question, explain the structure of nephron and write the mechanism of यूरिन फॉर्मेशन। ये नेफ्रॉन का ड्राइंग है। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, Malpighian of renal body, renal tube, formation of urine or physiology of urine, glomerular filtration, tuber reabsorption, tubular secretion. Next question, explain the mechanism of respiration. Mechanism of respiration, inspiration, expiration, write a note on skin, स्किन का स्ट्रक्चर कैसा है, ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द यार। ये यार का डायग्राम है। एक्सटर्नल यार, मिडिल यार, मिलियस, इनकस, स्ट्रिप्स, इंटरनल यार। एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द आई। ये आई का डायग्राम है। आई is divided into 3 layers: outer layer, middle layer, inner layer. Pupil, lens, aqueous chamber, vitreous chamber। उसके बाद इनर लेयर पे है रेटिना। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डायग्राम है।
Next question. Explain the physiology of skeletal muscle. Structure of skeletal muscle. Next question. Write a note on digestive enzyme. Next question. Explain salivary glands with its function. Three types of salivary glands: parotid gland, submaxillary gland, sublingual gland. Functions. Next question. Explain the anatomy and physiology of the liver. ये है लिवर का स्ट्रक्चर. Function of liver. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन एंड एक्सप्लेन रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स ARC. ये है उसका डायग्राम. Reflex consists of the following structure. Next question. Explain the structure of the brain and write a note on CSF. Brain is a part of CNS which lies within a cranial cavity. The brain weight about 1.3 kg. ये उसका structure. Brain consists of the following parts: cerebrum. It consists of four. Function of cerebrum. Functions of CSF. Next question. Write the difference between sympathetic and parasympathetic nervous system. Explain the hormone of the pituitary gland. ये उसका डायग्राम. Next question. Write a note on adrenal gland. Next question. Define spermatogenesis and explain its process. अगर आप लोग मेरे चैनल पे नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक